Right. So student, now we are going to learn how to draw electron dot structure for covalent compound. Electron dot structure of covalent compound. ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब हम कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। ठीक है, मीथेन, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीथेन। Methane is the first member of series of alkane, you know. So how to draw structure of methane? You know its chemical formula. Chemical formula of methane is CH4. Listen carefully, student. Chemical formula of methane is CH4. It means the carbon is covalently bounded with 4 hydrogen. So how we are going to draw its bond structure? One carbon, it means one carbon, and how many hydrogen? 4 hydrogen, means 4 covalent bond of carbon to which 4 hydrogens are attached, to which 4 hydrogens are attached. Okay, now ये जो covalent bonds है, look at this covalent bonds, student. This covalent bonds we represents by the sharing of electrons. We represent these covalent bonds by sharing of electrons. How? The single covalent bond represents by one lone pair of electron. Double bonds we represents with 2 lone pairs of electron, and triple bond we represents with 3 lone pair of electrons, like this. Okay, so if single bond is there, now see how we are going to represent. So the very first you have to draw the circle for the carbon. So now we are drawing the circle for the carbon. Okay, now you have to write C in that. C stands for, this is the atom of carbon. And now show 4 hydrogen bonds with the overlapping, like this. This is one hydrogen, this is another one, this is the third one, and this is fourth one. Okay, now why we have represented with the overlapping? Because the electron sharing is happening with the carbon and the hydrogen. One electron is shared by carbon and the hydrogen. So that sharing, how we represent? Use dot for the carbon, like this. Use dots for the carbon. So कार्बन के 4 बॉन्ड्स है, इसलिए कार्बन के 4 डॉट्स हमने ओवरलैपिंग में बता दिए. And show cross for the hydrogen. This is the cross for the hydrogen. So this dot and cross, what represents? One covalent bond between carbon and hydrogen, right? So here we will write hydrogen H, H, H and H. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सिंपल है, जो जो एटम्स है वो एटम्स आपको क्या करने हैं? सर्कल के फॉर्म में बनाने हैं, और जहां जहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग है वहां पर ओवरलैपिंग दिखानी है. नाउ हियर वी हैव टू यूज two symbols because it should clearly represent that which electron is for which atom. Basically we use dot for the metals and cross for the non-metals. Okay, but here one is a metalloid and both are non-metals, both are non-metals. So
Even if you use two crosses, that will be okay, but it looks very good if you use dot for the carbon and hydrogen for cross for the hydrogen. So it helps us to differentiate the electrons for a particular atom. ओके, अब हम इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, या फिर पहले इथेन देख लेते हैं. इथेन, व्हाट इज इथेन? इथेन is the second member of alkane. It is a second member of alkane. So its chemical formula is, its molecular formula is C2H6, right? C2H6. तो C2H6 हम बॉन्ड फॉर्म में कैसे बताते हैं? दो कार्बन, these two carbons are covalently bounded with one another. So कार्बन के बेसिकली 4 बॉन्ड होते हैं. एक बॉन्ड दोनों कार्बन का हो गया, ये बॉन्ड दोनों के लिए कॉमन होता है, ये इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा. तो टोटल 4 बॉन्ड होते हैं बिकॉज वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. तो एक बॉन्ड तो हो गया, बचे 3 बॉन्ड. तो वो 3 बॉन्ड इस तरीके से होंगे 1 2 3 1 2 3, और इनको हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6. देखो 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए. इनको भी इलेक्ट्रॉन डॉट में कैसे लिखेंगे? पहले ये कार्बन का हम सर्कल बना लेंगे, फिर दूसरे कार्बन का हम सर्कल ओवरलैपिंग के साथ बनाएंगे, बिकॉज इनमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है आपस में, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बना. और अभी हर एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच, 1 2 3 1 2 3. अभी हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे सी सी. अब इनके बीच में दोनों भी सी है, इसलिए एक एक डॉट बनेगा. ठीक है, एक एक ही डॉट क्यों बना? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, सी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको यूज करनी है, सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ हियर वी विल राइट हाइड्रोजन H H H H H एंड H. अभी यहाँ पर भी ओवरलैपिंग है, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है इनके. फिर व्हाट वी राइट हियर? डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, लाइक दिस. कार्बन का डॉट, हाइड्रोजन का क्रॉस, dot for the carbon, cross for the hydrogen. So this is the electron dot structure for ethane. अब डबल बॉन्ड वाले देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इथीन देखेंगे. इथीन, E represents the double bond, you know children. So इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4. C2H4. Bond structure of ethene, C double bond C H H H and H, right? So here double bond is there. Okay, so these two bonds have already completed, remaining two bonds satisfied by hydrogen. So इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज फॉर वन बॉन्ड एंड दिस इज फॉर अनदर बॉन्ड. एंड देन हाइड्रोजन 1 2 3 and 4. So this is dot cross dot cross dot cross and dot cross, H H H and H, right? Now for triple bond, ethene Y represents triple bond is there, right? So ethyne का structure C triple bond C. ये 3 बॉन्ड कार्बन के हो गए, बचा एक बॉन्ड satisfied by hydrogen. Its molecular formula C2H2. स्ट्रक्चर बनाओ, ये कार्बन का एक सर्कल बनाओ, इट्स वेरी सिंपल. दूसरे कार्बन ओवरलैपिंग, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सी सी नोट कर दो. ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
and one hydrogen. Hydrogen, hydrogen dot cross hydrogen dot cross hydrogen. Means it's very simple to write electron dot structure, but only when you know the molecular formula of that substance. Molecular formula अगर आपको पता है तो आप bond structure बना सकते हो. ये है molecular formula, ये पता होना चाहिए. तो आपने bond structure बना दिया. बॉन्ड स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? ताकि हमको इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने में इजी हो जाए कि किसके बीच में कितनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करनी है. ये इजी हो जाता है बाय राइटिंग द बॉन्ड स्ट्रक्चर. पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखो, उसके पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. सो कभी भी आपका स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा. ऐसे जितने भी मेंबर्स हमने पढ़े हैं डिकाइन तक का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ठीक है, you just have to check where is the covalent bonding and how many bonds are there. Those number of lone pair of electron you have to represent. अगर सेम एटम है तो सेम सिंबल यूज करो, एटम चेंज हो गया सिंबल चेंज कर दो. और पूरे के पूरे तीनों के तीनों होमोलॉगस सीरीज में सिर्फ दो ही चीजें हैं. एक कार्बन है जिसके लिए हम डॉट यूज करेंगे, हाइड्रोजन है जिसके लिए हम क्रॉस यूज करेंगे. ओके, राइट. सो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है.